some of the topics regarding string. Anybody can tell me what are the topics that we have covered? Anybody? Anubhav, can you tell me? Anubhav, am I audible? Yes, sir. Anubhav, can tell me what are the topics that you have covered in yesterday's lecture? I think Anubhav अभी मीटिंग ज्वाइन करके कहाँ पे चला गया ऐसा लग रहा है मुझे. Next, Rishika, can you tell me what are topics that we have covered? Rishika. Am I audible, na? Yes, sir. Okay, so you are not at your location, I think. You only joined the meeting for the lecture. So can anybody? What are topics that we have covered regarding string in yesterday's lecture? So हमने functions पढ़े थे. हाँ, functions that remaining functions, those are regarding strings, built-in functions. उसमें हमने split देखा था, join देखा था, is identifier, then enumerate, then strip, L strip, R strip, then count function, then that find, R find, index, then R index, then Z fill. These are the some of the functions that we have covered in yesterday's lecture. And then we have started with the slice operation. Okay, so in that slice operation we have seen that what is a slice regarding string. So slice is nothing but, as you know, one of the which is a specific substring which is available in that specific string. So substring हमें कुछ specifically display करना है. So for that purpose, what are we are using? We are using that slice operation, that is square brackets. In that square brackets we are mentioning the from what what is the starting point of that specific substring and what is the end point of that specific substring. So regarding that, some of the examples that we have covered. Again, we have covered stride thing, that is by default one से वो आगे जाता ही है, but you want to skip some of the character from that specific string. So for that purpose, we have used stride operator, stride string, that is 1 colon 10 column 2 likewise. Then we have covered with ORD and CHR function. So ORD function, can you anyone tell me what is the use of ORD function? What is the use of ORD function? Huh? प्रत्येक अल्फाबेटची स्पेसिफिक व्हॅल्यू असते, ती व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ओआरडी फंक्शन यूज करतो. Yes, yes. For each and every characters which are available on तुमच्या कीबोर्ड वरती जे काय तुम्ही की प्रेस करता. So for each and every key, some of the ASCII value is there, and to get that ASCII value, we are using ORD function. And similar to that specific ORD function, we are using CHR function, which is opposite to that ORD function. So what will happen with respect to CHR function? So CHR function gives you the character which is which having that specific ASCII value. For example, हमने देखा था कल example. If you are putting the CHR in bracket P, you are getting the capital B, you are getting the capital 66 value for that specific B letter. So likewise, we are also seeing some of the other values regarding characters, special characters. जैसे हमने curly bracket का करके देखा था, 123 वैल्यू डाला था, हमें वहां पे स्लैश मिला था, 92 वैल्यू डाला था तो वहां पे हमें कर्ली ब्रैकेट मिला था. So likewise, but in your exam, generally the question is regarding alphabets, that is capital A to Z and small a to Z. Okay, am I clear regarding ORD and CHR function? Am I clear? क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या वैल्यू हमें no need to remember the values of those other characters, that is curly brackets, single quote, double quote. Okay, only you have to remember one value, that is capital A 65 and small a 97, and for 0 48 and for 9 57, and in between that all values will be there. Okay, and then we have covered the topic that is in and not in operator. Okay,
So in and not in operator is used for what? What purpose we have to use regarding string? In and not in operator, membership operator. Can anybody? To check whether that specific string, yes, perfect. For checking whether that specific substring is present in given string or not, for that purpose we have to use that in and not in operator. Okay, and then comparing the string. What is the comparing the string? Anybody? What is comparing the string? To check whether two strings are equal or not. Am I clear? Yes or no? To check whether two strings are equal or not. Yes. So on what basis that string will be compared? On what basis that string will be compared? Whether that specific string is greater than this, or this string is smaller than this. On which parameter that string comparison will be done? Anybody? On which parameter this comparison will be done? That is, I am saying that small ABC is greater than capital ABC. On which parameter I am saying that this string is greater than this? Yes, ASCII value. As I have already told you, because each and every character consists of ASCII value, so depending upon that ASCII value, it will compare the given string. For example, जैसे कि हमने देखा था, small ABC greater than capital ABC, it gives you answer true. So why true? Because small a की ASCII value greater than capital A की है. That is 97 is greater than 65. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. So we will move forward with respect to next topic, that is iterating the string. ये already हमने देखा था, iterating the string. Iterating string. Screen is visible, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will move forward. So as we know, string is a sequence type. That is, it is a sequence of character. As I will write here only. As we know, string is sequence of character. Sequence of character. And each character having specific index. So it is possible to iterate that specific string. Okay. As we know, str is a sequence of character. So it is possible to scan, or we can iterate that specific string as we know the index of each and every string. Okay. So I will show you one example. We will do for both for loop also and while loop also. Okay. So I will write one string here. Good morning. And we will iterate this by using for loop. So I will simply write here for कैसे लिखना पड़ेगा हमें इसको iterate करना है तो what is syntax that I have to write? It is already covered in unit number 1. Unit number 1 नहीं, unit number 4 में string के regarding भी हमने देखा था, जहाँ पे indexing वगैरह हमने देखा था, indexing and traversing. That traversing is nothing but iterating itself. So what I have to write here? For in bracket for के बाद क्या लिखना है? Yes, I लिखा मैंने. That is yes, one of the variable counter variable which will be used for iterating that specific s1. Okay. Then in इसमें चेक करना है, यहाँ पे रेंज की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली s1 because s1 के हमें ट्रेस करना है. Okay. And simply I will write here what? Print in bracket I comma, आपको end करना है तो end से कर सकते हैं, एक ही लाइन में आपको चाहिए वो. Okay. Okay, so this is the iteration by using for loop. So I will write a comment here. Here we have, और नहीं डालना है, आप एक 1 by 1 आपको डिस्प्ले करना है तो सिंपली इटरेशन एक्चुअली वही पर्पस के लिए होता है कि 1 by 1 डिस्प्ले करना है. So simply you have to write I, so we'll get the each and every parameter regarding that. Okay, so here we have used for loop for iteration of given string.
अभी यही आपको इससे करना है, किससे, मतलब यही मुझे बाय यूजिंग व्हाट फॉर व्हाइल लूप करना है. कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू राइट दैट कोड? एनीबडी, how to write that code? Same thing, I will take same message. S1 is equal to good morning. अभी यहाँ पे while loop से iterate करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to take? कंडीशन के लिए कुछ लेना पड़ेगा, कुछ तो कंपेयर करना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes. So for example, I will take one variable I, उसकी वैल्यू 0, मतलब obviously आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, इसका S1 का, तो obviously I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट. अभी मुझे बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? What is the condition that I have to write here? I less than. What I have to write here? What is the condition that I have to write to iterate that good morning? That is, I have to display with GOOD, then space, then MORNING. Tell me whether this is correct. Whether this is correct. Okay. So we'll move forward. Okay. So then, what next thing you have to do? To print that specific I, na? So what is a thing that we require here? Another one variable we will take, for example j equal to, अभी j में हमें क्या स्टोर करना है? I स्टोर करना है. तो कैसे स्टोर करना पड़ेगा मुझे I की वैल्यू, मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू. How to write that? Whether this is correct? Sir, some students are waiting. Some students are waiting. It's almost 10:43. Okay, ठीक है. So what I have written here, j is equal to S1 in bracket I. Okay. So इससे हमें क्या मिलेगा? j की फर्स्ट वैल्यू मिलेगी. Okay. That is string की पहली वैल्यू. So print में क्या करूंगा मैं? What I will write here? Tell me. What I will write? What I have to print now? J. Yes, perfect. And then what I have to do next? अभी फर्स्ट I तो मिला मुझे 0. Yes, I is equal to I plus 1 ना? Am I clear? Yes, sir. Yes. So we will run this. Getting same answer using while loop also. Yes. Am I clear? So this is nothing but iteration of string by using for loop and while loop. Okay. So I will write here. Sir, if we... Hello. Hello. हाँ बोलो. सर while loop के कंडीशन में अगर हमने डायरेक्टली हाँ डाल सकते. यस लेंथ की जगह पे आपने पूरा, वहां पे कैसे होता है पूरा कैरेक्टर, मतलब आप ऐसे बोल रहे डायरेक्ट कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर वो बोल मतलब काउंट करके डायरेक्टली कंडीशन. यस यू कैन. Yes, you can. But ये क्या होता है? If your string is here only 10 or 15 characters are there, but your string is consist of 20-25 characters. So in that case, it is you have to count at each and every character. Then you have to measure that. So instead of that, you can simply write down that length function, and you have to pass that specific string inside that. You'll get the directly length of that string. So that is your last condition. Am I clear? Yes, sir. Yes. So here we have used while loop for iteration of given string. Okay. So I think you don't have any problem regarding how to iterate that specific string with respect to for loop and while loop. Okay. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay, so we will move forward with respect to next topic regarding string, and that is actually we have done all these things regarding that, but only we have to see what output with respect to that specific model. So next topic is the string model. The string
module. So as I already told you, the string it is one of the module given in what that specific Python. Okay, so string module consists of number of useful constant, classes, functions. Okay, उसमें से हमने function तो already बहुत से use किए, बहुत से मतलब almost all functions we have covered. Okay, and these functions are used to manipulate the string. Okay, so string constants are defined in the string module. Are some of the constant we directly see that constant, जैसे कि मैंने बोला था ASCII letters, lower case, upper case, digits, hexa digit, then octal digits, punctuation marks, printables, upper case. All these are the things that having some of the then in that some of the attributes are given for each and every that specific string module. But this string dot ASCII underscore letters से हमें क्या मिलेंगे? So that combination of ASCII, all ASCII letters, lowercase and ASCII uppercase constant will be there. Likewise uppercase के भी है, उसके बाद digits भी display कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना है आपको? देखो, simply you have to first what? Import string module. Okay, simply you have to import string module, and we will see directly one by one thing regarding that. जैसे कि मुझे अभी क्या करना है? String dot digits. So string dot digits से मुझे क्या मिलेंगे? The digits which are available in that string module. So only digits will be displayed. Am I clear? 0 to 9. Am I clear? All of you clear with the attribute, first attribute, digits attribute? Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So okay. So it gives you hash. It gives all digits available with string module. The next print in bracket, I will write str string dot opt digits. So octal digits means what? Which are the digits come under that category? Multiples of 8. Yes, multiples of 8 और 0 to 7 आना चाहिए ना? Yes, sir. Oct digits mean 0 to 7. Yes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Okay, am I clear? Yes or no? All of you getting? Yes, sir. Yes. So it gives you. So this can be asked in your exam. What is the use of this specific attribute of string module? Okay. So it gives you all oct digits available with the string module. Okay. So I will again copy this. अभी जैसे ऑक्ट होता है वैसे ही हेक्स भी होता है. Simply you have to write hex digits. Okay. So I will change this. अभी हेक्स मतलब क्या होता है? कैसे होते हैं numbers? Hex numbers 0 to 9 and A, yes. B, C, हाँ, D. A B C D in small and EF. in yes capital. Yes, A B C D E F. Yes, perfect. So it gives all hex digits. Getting 0 to 9 A B C D E F and capital A B C D E F. Am I clear? दोन्ही का डिस्प्ले होता है, स्मॉल पण आणि कॅपिटल पण. Yes, both are different things ना. दोन्ही होणार. Capital also and small also. Okay, sir. Then next, string in bracket string dot, for example अभी lower case बाकी है, lower case upper case बाकी है, lower case. Binary पण राहिले sir. Yes, binary is not there in this. Okay, regarding string attribute. Yes, sir. Okay. So hash it will use all alphabets in lower case. String has no lower case. Okay, okay. Spelling गलत हुआ है. सर ते पूर्ण नसेल, शॉर्ट फॉर्म मध्ये असेल.
No, it is same. Lowercase is same. Sir, model string had no attribute lowercase. Yes, lowercase. Wait. Right, another function attribute at lowercase. Okay, now we will see. हाँ यस, एक्चुअली वो लोअर केस के लिए क्या है, ASCII अंडरस्कोर लोअर केस है. Am I clear? Not lower case. Am I clear? So Yes, it will sir. use A to Z. Likewise, similarly for uppercase. So I will write here ASCII uppercase. So it gives you all alphabets in. It gives all alphabets in uppercase. Getting? Am I clear? Yes or no? Hello. Yes, So we will move forward. अभी यहाँ पे सेपरेट भी मिले हमें, डायरेक्टली दोनों भी चाहिए, तो you can simply write down upper के ASCII underscore letters. So you'll get all the letters that is in lowercase also and in uppercase also. So it gives alphabets in uppercase, in lowercase and uppercase. Am I clear? Yes or no? Yes or no? yes, sir. Okay, so next one is punctuations, which are with respect to strings. So print in bracket string dot punctuations. Yes. Getting? All of you clear with this? Punctuation means special symbols. Am I clear? Yes, sir. Yes or no? Yes. So this can be asked in your exam. What is the attribute that is used with that specific string module for specifying that specific? So here it gives all punctuations. Characters. Now next last one is remaining, I think, yes, printable. That is all the things. So print in bracket string dot printable. Printable में actually सारे आएंगे अभी, from numbers भी आएंगे. Then that is all the parameters that will be considered with respect to that specific string. Okay. So see, we will get that. Getting? Starting from 0, 1, 2, 3, 4, likewise ABCD, then all the symbols. Am I clear? Yes or no? Yes. So Yes, this sir. gives hash. It gives all printable characters, all string of printable characters. Use all the printable characters of string. Okay. So on this this question will be asked, what is the string module? String module के direct theory question नहीं, but regarding what are different string constants. So these are all a string constant actually. So ये अभी तक हमने जितने देखा ये नीचे वाले. So all are below. All are string constants. Okay. Am I clear? So ये याद रखना आपको, string dot digits
then occ digits, hex digits, ASCII lower, uppercase, letters, punctuations, and printable. Am I clear with this? All of you clear with this? Any doubt? No, sir. Okay. So we will move forward with respect to another. Actually help function already हमने देखा था, फिर भी हम उसको कवर करेंगे. कहाँ पे देखा था help function? Where we have seen that help function? कहाँ पे कवर किया था? फंक्शन मॉडल में देखा था ना हेल्प फंक्शन. Yes or no? So I will write here help in bracket s1 dot is alpha. To see what will the output. Getting it gives you what? So what is the use of that specific function is alpha function? Okay, am I clear? Yes or no? All the information regarding that is alpha function. Right, you can check other function also. Okay. No, actually upper function का यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें. अपर का स्पेलिंग बराबर लिखा है ना हमने. स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट? अपर का नहीं आ रहा है वहां पे. वी विल सी अनदर फंक्शंस. स्वैप केस. No Python automation found hello for hello. Use help to get the interactive help utility. The help str for help on the यहाँ पे नहीं मिल रहा है ये भी. So you can try it for actually what at your IDE compiler जो भी आप यूज कर रहे हैं ना IDE उसके ऊपर ट्राई करके देखो ये हेल्प फंक्शन एग्जीक्यूट होता है रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग. Am I clear? Am I clear? यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. So you can try it IDE also, your IDE that you are using. Okay. So it gives what is the use of given function. Okay, so help function is used for to check whether for what purpose that swap case or that specific is alpha that function is used. Okay, so this is all about the modules or the string module. Am I clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, so we will see some of the programs regarding string for practice purpose. First program I will tell you the statement, problem statement. All of you have to try also. I will also try it. So write a program. Write down title. Write a program. एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम नहीं पूछेंगे but for practice purpose we are solving these problem statements. Okay, write a program that encrypts a message by adding key value to every character. By adding key value to every character. Okay. So, and that key you can take, for example, 3. So I will write here comment key is equal to 3. So all of you getting the problem statement or not? All of you getting the problem statement? Fast. और बोलो कुछ तो yes or no? Yes, sir.
हाँ क्या करना है आपको, string- एक, हाँ आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेना है। ओके, स्ट्रिंग मतलब एक मैसेज होगा वो, और उसको क्या करना है आपको, उसमें की वैल्यू 3 ऐड करके आपको एनक्रिप्ट करना है। मतलब जैसे कि मैंने, तो की ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ORD एंड CHR फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? मतलब कैसे, जैसे कि मैंने एक मैसेज लिया हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, और व्हाइल लूप यूज करके मैंने क्या किया, हर एक कैरेक्टर उसका मैंने क्या किया, इटरेट कर रहा हूं मैं। सो इटरेट करने के बाद उस कैरेक्टर में 3 वैल्यू ऐड करना है मुझे। क्या वैल्यू ऐड करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है? हर एक कैरेक्टर में 3 वैल्यू ऐड करने के बाद जो भी आपका एनक्रिप्ट होकर मैसेज मिलेगा आपको, कुछ तो अलग मैसेज मिलेगा। जैसे कि मैंने ए में 3 वैल्यू ऐड करने के बाद मेरा ए 65 प्लस 3 कितना हो गया, 68। मतलब दैट 68 इज नथिंग बट व्हाट इज अ कैरेक्टर, ए बी सी C। डी। यस, डी विल बी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, डी डिस्प्ले होना चाहिए। तो लाइकवाइज फॉर ऑल कैरेक्टर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, so all of you try. I will also write here. I will type a code. So as your side also you have to type it. So for example, I will take a message M1, and in that message I will write for example simple message, जैसे कि हमें encrypt करने के लिए easy, मतलब वो output क्या होगा actually में. So for example, I will write A B C D G F, ऐसा कुछ तो message लिखा मैंने, okay. And then वन, अभी while loop से करेंगे तो I will take one इंडेक्स। आपको फॉर से करना है तो यू कैन ट्राई इट बाय फॉर लूप। आई लेस देन लेन इन ब्रैकेट, पूरा स्ट्रिंग ही स्कैन करना है तो आपको ऑब्वियसली M1 डालना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ओके, देन वन अनदर वेरिएबल फॉर एग्जांपल j इक्वल टू, जिसमें हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे वो कैरेक्टर को। ओके, अभी ये तो हमें समझिए, तो सबको पता ही है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट में लिखता हूँ ORD of what we required, ORD of what, S की वैल्यू किसकी चाहिए हमें, J की ना। एम आई क्लियर? और उसमें क्या ऐड करना है आपको, +3। एम आई क्लियर? अरे ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो उसके बाद एंड, बट एस की वैल्यू में हमने ऐड किया, बट उसके बाद हमें कैरेक्टर भी चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा, सर आलं यस, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सर बघा मी CHR आता ऐड करना पड़ेगा हमें। So CHR in bracket like this, and उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, I +1। So you'll get the output for this। ये क्लियर है सबको, ये कैसे किया समझ में है सबको, yes or no? All of you Yes, getting? sir. यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया। ओके, so CHR ORD, okay, am I clear? Okay, so we'll run this। Yes, sir. मिला हमें एनक्रिप्टेड मैसेज, क्या मिला हमें, DEFGIMMNY एम आई क्लियर? Yes, sir. यस, अभी यहाँ पे मैंने की वैल्यू चेंज किया तो you'll get another आंसर। जैसे कि मैंने 1 किया तो मैंने एक के जगह पे मुझे B आना चाहिए, B के जगह पे C आना चाहिए, एक एक कैरेक्टर आगे जाना चाहिए, वो होगा। गेटिंग? B C D E H G K K L T। All of you understood the problem statement and the code for that? Yes or no? Write a program that encrypts the message by adding a key value to every character. Key is equal to 3, or you can take any other 3. Am I clear? Yes, sir. अरे Yes, बोला sir. फिर काहीतरी बोला, yes or no तो काहीतरी बोला। Okay? Yes, sir. येस सर Now next thing, hash, अभी ये आपको करना है, write a program to reverse a string। इसके लिए मैंने जो बताया वो नहीं करना है आपको, कोलन कोलन वाला नहीं करना है, सिंपल लॉजिक लिखना है आपको, यूजिंग व्हाइल लूप करना है आपको। डू इट।
write a program to reverse a string. Enter given string. तो लेन निकाल के रखा मैंने, and then while I greater than 0, greater than equal to 0 करना पड़ेगा. Then new str, new underscore str plus equal to, ऐड का करना पड़ेगा str s1 of I, एंड देन I माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हमने लास्ट से स्टार्ट किया था. I माइनस इक्वल टू 1, एंड देन print new str, new underscore str. ये बराबर है क्या लॉजिक? whether this logic is correct or not? अरे बोला काहीतरी, झोपले का? am I audible? Yes, sir. ओके. ओके वेट, यहाँ पे अभी वो बटन में ऑन किया मैंने. So whether this logic is correct or wrong? Can anybody? यहाँ पे -1 करना पड़ेगा ना, बराबर ना? आप कुछ बोलते ही नहीं होगा, क्या करना है अभी? ठीक है, एंटर स्ट्रिंग, ये फिर से, हाँ ये पहले वाला आउटपुट आया वहां पे. ठीक है, आई विल एंटर. गेटिंग आउटपुट, यस और नो? Yes. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस Yes, sir. लॉजिक? तो क्या किया मैंने पहले, आई हैव टेकन वन स्ट्रिंग एज ए इनपुट, एंड न्यू str जिसमें हम क्या करने वाले, रिवर्स वाला करने, तो उसको पहले एम्प्टी रखा मैंने, सिंपली डबल कोट्स लिखा, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर. ओके, देन I is equal to len of s1 minus 1. क्यों आ गया यहाँ पे? एनीबडी कैन टेल मी क्यों किया यहाँ पे len -1? सर वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट यस यस, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट लास्ट इंडेक्स क्या होता है हमारा? नॉट योर लेन ना, n-1 होता है. यस यस, इसलिए मैंने लास्ट इंडेक्स से हमें चाहिए, तो लास्ट इंडेक्स क्या है इसमें? फॉर एग्जांपल अमोल का लास्ट इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3. सो 3 टोटल लेंथ क्या है? 4 - 1, तो 3. सो 3 से स्टार्ट हो, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है. तो 3 का वैल्यू क्या है? l. सो l वहां पे ऐड किया और l को डिस्प्ले किया, मतलब ऐड करते जाए न्यू str प्लस इक्वल टू s1 ऑफ I, तो ऐड होते जाएगा वो LOMNA. और I माइनस क्यों करना है? बिकॉज 3 के बाद हमें चाहिए सेकंड इंडेक्स, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स, एंड देन 0th इंडेक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? टू राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स गिवन स्ट्रिंग. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, all of you try this and send me the screenshot right now. सबको करना है.
And next homework for you, all of you try at your home, write a program to print. This is the homework. Print the following pattern. Okay, and that pattern is this. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किसी ने तो पूछा था इन व्हाट, कहाँ पे हमने जब नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम देखा था हमने, तो उसमें कुछ लोगों ने, आई थिंक किसी ने, मुझे याद नहीं है, बट किसी ने तो पूछा था हाउ डिस्प्ले दैट अल्फाबेट्स और लाइक दिस पैटर्न। तो अभी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग यूज करके ये करना है, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप एंड स्ट्रिंग। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ORD एंड CHR फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes or no? Yes. So यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहली चीज बात याद रखनी है, टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू डिस्प्ले, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, लास्ट में देखो 1 2 3 यस 6। तो आउटर फॉर लूप की रेंज क्या होगी, 1,7, बराबर ना? Yes or no? Yes. यस, बिकॉज वो A के बाद AB के लिए जाना पड़ेगा, ABC के लिए ABCD एंड देन ABCD एंड ABCDF। ओके, एंड इनर फॉर लूप में आपको पहला कैरेक्टर क्या लेना पड़ेगा, मतलब फॉर लूप के अंदर जाके पहला कैरेक्टर कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, CH इज इक्वल टू A से। एम आई क्लियर? फॉर लूप के बाद अंदर जाने के बाद CH इज इक्वल टू A लेना पड़ेगा। उसके बाद फॉर लूप, इनर फॉर लूप में आपको J रेंज लेके वहां पे एक रेंज लेना है, वो रेंज क्या है मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद आपको प्रिंट CH करना है, और उसके बाद CH इज इक्वल टू वो आगे वाला जो भी पार्ट है, दैट यू हैव टू डू। Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So we will stop here for today's session because we have covered with all the things regarding unit number 4 also. So in that, what are the topics that we have covered? First, basically thing is what is a string, then how to define your string, then how to indexing of that specific string, how to get index, a specific value at that specific index, then traversing of your string, then concatenation of your given string, that is how to concat two strings, that is plus operator, appending plus equal to operator, and that is at the last of that given string you have to add something, then multiplying operator, that is star operator for displaying that specific string multiple times, then followed by we have started with formatting, string formatting operator, that is %C, %D, %F, %I, %F, like these are the different format specifier. So उसके रिगार्डिंग भी एक प्रोग्राम हमने देखा था। ओके, रॉ स्ट्रिंग भी देखा था। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ स्मॉल r और कैपिटल R? व्हाट इज द यूज ऑफ स्मॉल r और कैपिटल R? जेव्हा /n करतो ना आपण, ते /n पण डिस्प्ले होतं। यस यस, फॉर व्हाट पर्पस यू हैव टू यूज, जैसे कि हमने किया था कि /n/t, these are the escape sequence characters which are invisible, that is which are, that will be not reflected in your output, but output is reflected in the form of what, /n होगा तो न्यू लाइन पे जाएगा, /t होगा तो टैब आएगा दो कैरेक्टर, दो वर्ड के बीच में। बट if you want to display those also, for that purpose you can use what, that specific raw string, that is r in bracket, then उसके बाद वो जो भी आपको डिस्प्ले करना, that you have to write. Okay, so that is nothing but raw string. उसके बाद हमने देखा था some of the built-in functions regarding string, उसमें is upper, is lower, lower, upper, then is alphanum, is digits, is space, then strip, L strip, R strip, Z fill, find, R find, index, R index, then count function, capitalize function, title function, split function, join function, is identifier function, then next function is what, is enumerate function that we have covered, then in and not in operator with respect to string, then comparison of two strings, different operator that we have covered, slicing operation with respect to string that we have covered,
then iteration of given string that we have covered, and modules, different string modules that we have covered. String module के different attributes that we have covered. उसमें ASCII lower case, upper case, then digits, hex digits, octal digits, different things, and some of the program regarding string, for extra programs regarding your string. So वो एक example है, मैंने आपको ये वाला आपको homework करना है. And in Friday's lecture, I will check or I will discuss this program. Then we will start with unit number 5, that is object-oriented concepts. Okay, with respect to programming, that is with respect to Python. Already बहुत से student ने C++ पढ़ा होगा, उसमें some of the features, class, object that you already learned. But with respect to Python, we will learn in unit number 5. So all of you give the attendance. Roll number 1. Sir, C01 present. Okay. Roll number 2. C2 present. Okay. Roll number 3. C3 present, sir. Okay. B3. Okay. Roll number 4. Roll number 4. Roll number 5. Roll number 6. C6 present, sir.